Hello everyone, welcome to Science Express. Now let's start current affairs capsule, daily current affairs, September, day 5. Gotipua dance, recently seen in the news, is a traditional dance form of which state? गोटीपुआ नृत्य हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सो आंसर इज ओडिशा. Okay, Gotipua is a traditional dance from Odisha performed by the young boys who dresses as women to honor Lord Jagannath and Lord Krishna. So, Gotipua is a traditional dance form of Odisha. Recently, who was appointed as the DG of CISF? हाल ही में किसे CISF के DG के पोस्ट पे नियुक्त किया गया? Okay, CISF, Central Industrial Security Force. Name of the person is Rajvendra Singh Bhatti. Okay, the central government has appointed senior IPS officer Rajvendra Singh Bhatti as a DG of CISF. He has been appointed as the 31st DG of CISF, and CISF, Central Industrial Security Force, it established in 1969. Okay, and CISF works under the Ministry of Home Affairs. Challa Srinivasulu Setty has become the 27th chairman of which organization? Challa Srinivasulu Setty किस संगठन के 27th अध्यक्ष बन गए? Name of the organization is SBI, State Bank of India. Challa Srinivasulu Setty became the 27th chairman of India's largest commercial bank, that is SBI, on 28 August 2024. Okay, and he succeeded Dinesh Khara. SBI founded in 1st July 1955 and SBI headquartered in Mumbai. Farakka barrage, recently seen in the news, is situated on which river? फारक्का बैरेज किस रिवर के ऊपर स्थित है? नेम ऑफ द रिवर इज गंगा रिवर. फारक्का बैरेज इज ए बैरेज अक्रॉस द गंगा रिवर लोकेटेड इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ओके, सो फारक्का रिवर recently seen in news, it is situated on Ganga river. As per the news, Manu Bhakar shooting range was inaugurated in which city? समाचार के अनुसार मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? द आंसर इज ग्वालियर. ओके, यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरिंद्र सिंधिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, inaugurated a 10-meter air pistol shooting range in Gwalior, Madhya Pradesh. Manu Bhakar won 2 bronze medals at 2024 Paris Olympic, and she is the first Indian athlete to win 2 medals in the same Olympics. Okay, so Manu Bhakar shooting range was inaugurated in Gwalior, Madhya Pradesh. Recently, which day is celebrated as a National Sports Day annually? हाल ही में किस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है? द आंसर इज 29 अगस्त. नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 29 अगस्त इन इंडिया. द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद, ए लेजेंडरी हॉकी प्लेयर who greatly contributed to India's success in hockey. So, 29th August is celebrated as a National Sports Day on the occasion of birth anniversary of Major Dhyanchand. Saint Martin Island, recently seen in the news, is located in which country? हाल ही में समाचार में देखा गया सेंट मार्टिन आइलैंड. सेंट मार्टिन आइलैंड किस कंट्री में स्थित है? द आंसर इज बांग्लादेश. सेंट मार्टिन आइलैंड इज लोकेटेड इन बांग्लादेश. फॉर्मर बांग्लादेश PM Sheikh Hasina accused the USA of trying to overthrow her due to
her refusal to seek control of Saint Martin Island. Okay, and the island is also known as a Narikal Jinjira or Coconut Island. Okay, so another name of the Saint Martin Island is Coconut Island, and this island located in Bangladesh. Recently, who has been appointed as the chairman and CEO of the Indian Railways? हाल ही में किसे भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? नेम ऑफ द पर्सन इज सतीश कुमार. ओके, सतीश कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द इंडियन रेलवे बोर्ड. The appointment committee of the cabinet approved the appointment of the Satish Kumar as the chairman and CEO of the Indian Railway Board, and he succeeds Jaya Varma Sinha. Okay, he succeeds Jaya Varma Sinha. Recently, who has launched the AI assistant chatbot Rufus in India? हाल ही में किसने एआई असिस्टेंट चैटबॉट रूफस को लॉन्च किया इंडिया में? सो आंसर इज Amazon. ओके, ई-कॉमर्स जायंट Amazon India has launched its artificial intelligence powered shopping assistant, that is Rufus, in India. Okay, and Jeff Bezos founded Amazon.com in 1994. Okay, so Jeff Bezos is a founding member of Amazon and it's set up in 1994. Recently, who won the 61st National Chess Championship? हाल ही में इसे 61st National Chess Championship को जीता है. Answer is Karthik Venkataraman. Karthik Venkataraman won the 61st National Chess Championship. Grandmaster Karthik Venkataraman from Andhra Pradesh won 61st National Chess Championship in Gurugram. Okay, and the event was organized by the Haryana Chess Association at RPS International School. Okay, and he is from Andhra Pradesh. ये एक क्विज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. जिसका आंसर राइट होगा उसको हम उसके आंसर के पास हम एक हार्ट साइन दे देंगे. ओके, सो ये एक क्विज क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है. रिसेंटली हुज बर्थ इज सेलिब्रेटेड एज ए टीचर्स डे इन इंडिया? किसका जन्मदिन इंडिया में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है? नेम ऑफ द पर्सन्स आर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी. सो किसका बर्थडे हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं? थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.